ability to invest at lower levels like 16,000, 15,000, 14,000. Okay, okay. So Arush Let bhai, me let me add one point here. Okay, 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 yeah. I was since 1 week I was reading on major fall in the U.S. market. The how it came, how it occurred. So what I found is there are some attributes it why they fall in the market. First of all, there is a continuously hike in the interest rate which is happening now. Second is the inflation continuously which is happening now. The third one is disturbance in the global order which is not happening now. Okay, so 33% chances are in the favor of bulls, and 67% are in the favor of. And as of now, there is nothing major major disturbance from industry point of view. So the people who are expecting, let's say, 12,000, 13,000 is very for yes. The chances of Nifty hitting 16,000 and below are very much around 90%. But Nifty going to 12,000, 13,000 is very very far. And at current this one juncture, if we are trading in the direction of trend which is bearish, so the percentage, the success rate we are going to make money is around 80% if we trade in the direction of main trend which is bearish. Yeah, thank you. Very true, very true. And yeah, by the way, thank you, Arush bhai, for giving out the broader perspective view on the market. And by the way, Arush bhai, मुझे पता है कि like you have a strong holding on to the intermarket analysis. So how are you looking at the sector rotation playing out in the market when we see money moving out from one sector to another sector? So how are you looking at the market from sector perspective, and where do you see money coming out from, and where do you see money going into? Correct, Sunil bhai. So I think since last few days and weeks, money is constantly moving out of IT sector. So all the large cap stocks are getting hammered, like Infosys, TCS, and Mm-hmm. Wipro, Emphasis. They are falling on daily basis. And on the other hand, money was going in consumption few days back, wherein the big shots of the consumption space like Godrej CP, Mm-hmm. Nestle, Dabur were doing well. Now even those are giving up. So when the bear market comes, every sector starts giving up. But FMCG being a defensive sector, pharma being a defensive sector, usually attracts money in a bear market. So I think even those sectors can fall, but intensity of fall may be less in consumption basket, and those stocks are not so overvalued, leaving apart DMart. Stock with low beta usually outperforms the market, and when the storm is out, these stocks like Nestle usually do well. So there's the money is chasing such baskets, such spaces. Okay, okay. Thank you so much, Arush bhai, for giving out the very, very like a broader aspect perspective on the market, and thanks for that. So I guess Sajan bhai, we have Harsh bhai as well, the one who keeps on doing the EW counts. कैसे Hello. हो? Hi. Hi, hi, Good evening, hi. all. Hi, hi. Good evening, all. So, Nifty. If we look at Nifty, Bank Nifty, definitely the trend is down. But Nifty and Bank Nifty is not the entire market. Actually, a lot of people get confused looking at Nifty. Nifty is not even reflecting entire market, because Nifty can be manipulated just by 10 stock heavyweight. So Nifty is down because Reliance is down. Nifty is down because Bajaj Twins are down. Kotak is down. IT stocks are down. But that does not mean entire market is down. If you look at PSU banks, PSU Mm-hmm. bank sector, PSU bank index is still above 2021 high, where Nifty had made a high of 18,600. PSU bank index is still above that.
If you look at capital good index, capital good index is still above 2021, 2022 highs, and it is still trading at highs. If you look at PAC stuff, public sector enterprises, they are above 2021 highs. If you look at power stocks are above 2021 highs. Mm-hmm. Uh, Infrastructure stocks are near to the highs. FMCG is doing good. Auto stocks are doing good. So basically, Nifty does not reflect entire market. Nifty trend is down, but that does not really mean that the entire market is underperforming. It's a selective performance. I would say it's a sideways market. From 18 months, we have a sideways complex correction in terms of Elliott waves. What I do, even Sunil Bhai understands. Yeah, yeah. And yeah, so and we are almost into 18 months of sideways market, and I think the 18-month cycle is completing now. So there should be turn around. Obviously, the trend is down, and when the trend is down, one should not look for a turn around. Rather, wait for market to actually turn around and then start taking long positions. Uh, but uh, over here, if you are talking about a big uh, downfall from here, I don't think that should be coming. If I look at the dollar index, DXY, the dollar Mm-hmm. index is clearly in a downtrend, and dollar has negative correlation, opposite correlation with the stock market. So obviously, for a shorter term period, there could be some divergence. But if you look at a longer term trend, year on year trend, the stock market and dollar always have a negative correlation. So dollar has already started going down, and that gives a sense that stock market should start coming up. In dollar index, the trend was down since October highs, and then it made a retracement, and again the trend is down. So it is Mm-hmm. signaling that the next level of downtrend has started in dollar index. Uh, so we just need to wait for equities to turn up. If we look at Okay. the bond yields also started going down. The bond yields actually stopped going up about 4%. If you look at the Mm-hmm. chart, after November, it has stopped going up about 4%. It is Correct, now correct. slowly starting to trend down. So probably it is signaling that there may not be rate hikes. There could Mm-hmm. may not be rate cuts in future, but if you are talking about rate hikes, they may not come. So some kind of liquidity might be there available in market. If you look at the Bitcoin crypto chart, so if we are talking about a financial collapse or a crash coming in market, crypto is one kind of asset class which definitely one will not like to invest. But the crypto has currently given a sharp rally amidst this SVB crisis. So that again signifying that probably market knows something that we don't know, because the money is going to the riskiest asset class. It is the Correct, correct. riskiest asset class, and it can tumble 50% in a day. So why would one put money in such an asset class if we have a big risk? Uh, Another thing is crude. So again, crude and equity always have a positive correlation on a longer term basis. I'm not talking about the short term. Um in short term, on a daily, weekly basis, there could be a divergence. But on a yearly time frame, crude and equity has a positive correlation. And if I see the crude chart, purely terms in terms of Elliott wave structure, it is completing a triple zigzag correction. Probably only Sunil Bhai would understand, or anyone is doing Elliott waves, they would understand what I'm talking. Okay, and Elliott wave says triangle always comes in a wave prior to the last wave. Basically, in simple word, triangle always comes in a second last wave. After that, there is a last leg of fall, since there was a downtrend. So that fall has already happened in crude. After a triangle, there was a breakdown, there was a sharp fall, and now crude is trying to reverse, and it is reversing above the immediate swing high of 76. I'm talking about Brent crude. Mm-hmm. So again, crude is signaling that probably the downtrend.
in crude is coming to an end, and we just need to wait for higher top, higher bottom formations to form in crude. And again, crude and equity have a positive correlation. So if I look at a lot of things like bond yields, dollar, crude, yeah, Bitcoin, these things are suggesting me that probably the downtrend in equity should be coming to an end. The worst is probably already done. But yes, obviously we have to wait. We'll have to wait until the equity actually start going up. If market has to go up, if we buy at 17,800, it does not matter. So yeah, so basically, Harsh bhai, I could see like you gave a like a view on the entire. I mean, all the asset classes. Talking about, let's say, the bond market. Uh, yeah, but I would like to ask one thing that am I audible? Harsh bhai, am I audible? Yes, Yeah. yes, Yeah. yes, So yes. I was saying that we have one guy in the house right now who is like saying I am bullish in the market. Okay, so I definitely concur what you say, but but what I would like to say is that you are saying that we are very soon going to breach the so-called 200 EMA, which is pegged at 17,500. So Harsh bhai, let me ask a question which is more relatable to the retail trader or retail investor. Okay, because we have retail people in the house right now. So if I put a gun at your head and I would tell you that you have only let's say 2 to 3 sector to invest, or let's say 2 to 3 stocks to invest. I am going very stock specific and sector specific. So where would your bets be and why would you do that? And second thing I would like to say that yeah, definitely I do Elliott wave and I know that, but Elliott wave in itself is a subjective tool, you also know, and you do not have an objective point. I mean, sometime a simple correction will go into zigzag, more complex correction, and that time correction will happen on the later stage, and that thing will continue to go on and on. But on the objective note, if I ask you this question, how would you say, and what would be your view? I guess he has gone out of the space. I guess there was some issue. Sajanji. Hello, Yeah, I guess he has gone out of the space. I guess there might be some issues, but yeah. hello. Yeah, Okay. So now what we can do, we have taken views from the technical guys. We do have, I guess, Arka bhai, aap ho. Uh, we would like to take your views on the market. Okay, so I have invited you, Arka ji. You can accept the request and speak as to whatever you have for the retail investor or the retail trader, because we have taken cues from the technical guys. We have taken views from Arush Bhai and Vishal Bhai and Harsh Bhai and so on. Now let's take some cues with respect to fundamental analysis and see what fundamental guys are thinking about the market. What do you say, Sajan Bhai? before hello, so Sunil bhai, Uh-huh. Yeah, hello. yeah, yeah. Tell me, tell me. Yeah, actually, before going forward, I would like to add one very important point on USD side, US dollar. Okay. If we see the on technical chart, in May month 2022 and in Jan 2023, there was a strong support near 100 on USD, and as of now we are approaching that support. And whenever whenever support happens, there is a sharp reversal in the world market, I mean on downside. So from current levels, as per my understanding of the market, we might see a fall in the world market in next for the next 2 3 weeks. Yeah, thank you. Okay. So I guess now we can take views from the fundamental guy. अर्का जी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है. I am again like sending you the I am again like sending you the request. You can accept the request and
speak to us to fundamental aspects. Meanwhile, we can take up a few questions, Sajan bhai. Yes, please, please. So, Yeah, those who want to ask anything, please raise your hand. We'll make you speaker. And one person is there, Mahadeep Singh Chauhan. Yeah, you want to ask anything? yeah, so I'm expecting Jaipal Singh request, and he will be able to speak now. Jaipal ji, yeah, you are able to speak now. You can ask a question. I guess he's connecting. Yeah, please, Jaipal ji, please go ahead. I guess he is not able to speak. Then we can take up question of Dheeraj. Okay, so I just accepted the request. Dheeraj, I guess you'll be ready to go. You can ask your questions. Okay, so I guess I don't know what is happening with this request, or people are not able to ask any questions, or I don't know what's happening. Meanwhile, what we will do, uh, we can we can take आरुष भाई's view on stock specific ideas. So आरुष भाई, आपको कोई लगता है कि मतलब कौन सा स्टॉक्स आपके रडार पे हैं अभी, और आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक्स आने वाले दिन में अच्छा कर सकते हैं, टेकिंग द व्यूज विथ रिस्पेक्ट टू, आई मीन टॉकिंग फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ मोमेंटम स्टाइल और द स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल. आरुष भाई. In between, we have Kulbhushan. Yeah, Kulbhushan, can you hear? Yeah. Speak, yeah. Yeah, please go ahead with your view on market structure after Okay. US Fed rate hike. So Sajjan bhai, I was listening carefully, and I really, delighted that there are so many intelligent person in this space. You know me personally, I'm not that, called myself as a, fundamental analyst or technical analyst. I am a trader, and trader also some intraday or having the 1 or 2 days overnight positions. That's all. For investing perspective, I will like to mention, and I'm not against to anyone. Just beg me pardon if my words will hurt anyone's sentiments. यूएस में जो फेड है ना, उसकी समझ में सिचुएशन नहीं आ रही है अभी चल क्या रहा है, कैसे हैंडल करें. तो हम लोग जो यहाँ पे एनालिसिस दे रहे हैं ना, ये हम रिटेलर्स को ना मिसलीड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. मार्केट अभी वीक ही है. अगर ये रैली निकल भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ खत्म नहीं होगी. लेकिन अगर ये नीचे चला गया ना, मार्केट क्रैक हो गया, तो बहुत रिटेलर का पैसा चला जाएगा. और स्टॉक स्टॉक के चक्कर में पड़ना छोड़ो. कोई रिटेलर ने आज तक, रिटेलर छोड़ो, म्यूचुअल फंड्स हाउसेस जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनका डेटा है, टीम है, वो इंडेक्स बीट नहीं कर पाते. तो रिटेलर तो बेचारा कैसे करेगा. तो स्टॉक के चक्कर में भी मत पड़ो. निफ्टी बीज इंडेक्स लेना, वो भी अपना एक 5 ईएमआई बना लो, जो एसआईपी टाइप की 20-20%, बहुत कंजर्वेटिव हो, 10-10% बनाओ. मार्केट ओवरऑल ग्लोबल ही हम देखेंगे, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं सारी कंट्री की इकोनॉमी. और यूएस की सिचुएशन आसान नहीं है. ये यील्ड चला गया, फेड अभी बहुत प्रॉब्लम है वहां पे, इतना आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है. इंटर रिलेटेड है सारे बैंक्स के, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस जितनी भी है, इंडस्ट्री है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है. आई एम बीइंग द आईटी, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है. अभी एसेंचर 18,000 लोगों को फायर करने वाली है, और अभी ये स्टार्ट होने वाला है सर्विस बेस में. अभी तक स्टार्ट हुआ था सिर्फ प्रोडक्ट कंपनीज में, अभी सर्विस बेस में स्टार्ट होगा. एंड वी आर द ओनली वन हु इज द मोस्ट एक्सपोर्टर इन सर्विस इंडस्ट्री इन द आईटी इंडिया. बहुत बड़ा हैम्प होने वाला है. मार्केट ऊपर जाने का मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आता है किसी भी तरीके से. नो नथिंग इन्वेस्टर जिसमें दिमाग ही नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, बेसिक आप दिमाग लगा लो. पॉलिटिकली भी अभी आप देखोगे तो बहुत पैसा चाहिए 2024 के इलेक्शंस के लिए, वो सारा मार्केट से निकलेगा. बहुत बड़ा इवेंट है इंडिया में इलेक्शन होना. इट्स ए वेरी बिग इवेंट. पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा इवेंट नहीं होता इलेक्शन के प्रोस्पेक्टिव से.
तो कितना भी अच्छा बिजनेस करेगा इंडिया, वैसे भी यूएस से रिलेटेड है, तो भी नहीं बढ़ने वाला, पैसा भी निकलेगा तो भी नहीं बढ़ने वाला। बढ़ेगा, अच्छी बात है, हम मिस कर देंगे रैली, लेकिन अभी लॉन्ग जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो जैसे आपने बोला इनिशियली, 2/3% पोटेंशियल है, मार्केट नीचे जा सकता है, 1/3% ऊपर जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी हमको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। बस बाकी ये फंडामेंटल मैं जानता नहीं हूँ। टेक्निकल चार्ट पैटर्न प्रोजेक्शन देखो, ट्रेड लेते हैं आराम से, 3 से 4% महीना बन रहा है, मार्केट जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 50,000 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडर तो ट्रेडर है। ट्रू सीधी सी ट्रू बात ट्रू। तो है। कुलभूषण जी, मतलब definitely I respect your views, but let me ask you a simple question. That you are saying that you would not say anything with respect to fundamentals, but let me ask you this question, that अगर कोई retail investor है and अगर वो investing करना चाहता है, so then how he should go or she should go about investing into Nifty Bs? What तो should be the approach? ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं अपना सेटअप बताता हूँ हम्म। और आप इसको 20 साल टेस्ट करो। देखो, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हाउ वी शुड पार्टिसिपेट इन द इक्विटी मार्केट। एक तरीका तो ये है कि आप खुद स्टॉक एनालाइज करो, खरीद लो। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई दूसरा एनालाइज करे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, उसके बेसिस पे खरीद लो। तीसरा एक और तरीका है जो आज की डेट में बहुत बेस्ट तरीका मुझे लगता है, क्योंकि दोनों तरीके में क्या दिक्कत है, जब म्यूचुअल फंड ही एनालाइज करके आप कोई भी ले लो, अपनी इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते वो, तो हम लोग कैसे कर लेंगे भाई, है ना। तो बेटर ये है कि निफ्टी बीस में इन्वेस्ट करो, 12 से 14% True, true. का रिटर्न होता है, एसआईपी फॉर्म में करोगे तब। और अगर आप थोड़ा सा टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हो, तो बेटर क्या है कि निफ्टी 50 का चार्ट खोलो, डेली का चार्ट खोलो, उसमें आरएसआई पुट करो। जब भी आरएसआई 30 टच करती है, ये हर साल में एक बार, 1.5 साल में एक बार, 2 साल में एक बार जरूर करती है, एसआईपी हम्म। बंद कर दो। एसआईपी बंद कर दो, मान लो कोई 10,000 रुपए की एसआईपी करता है। अच्छा मैं अच्छा। एक बहुत अच्छा बता रहा हूँ तरीका जो मैं करता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, मैं बिल्कुल हम्म। गलत भी हो सकता हूँ, और मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि भाई मेरी एडवाइस लो, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। अगर आप डिसिप्लिन हो तो एसआईपी बंद कर दो। सपोज आप 10,000 की रुपए की एसआईपी करते हो, उसकी आरडी करो, हर महीने आरडी कर दो, रिकरिंग डिपॉजिट। वो आपको 6% रिटर्न देगी एवरेज, कभी 5 है, एफडी का रेट कभी 7 है, चलो एवरेज 6 लगा लिया। अभी आप देखो 1.5 साल में निफ्टी ने तो कुछ रिटर्न दिया नहीं, लेकिन अगर आपने आरडी कर दी 10% रिटर्न देता। अब जब भी मार्केट में आरएसआई 30 टच करती है, जो ये बोला जाता है कि यूजली जब आरएसआई 30 टच करती है तो वो बोला जाता है ओवरसोल्ड। अभी ये एक तरीका है बस कि भाई अभी ऐसा लगता है इसकी वैल्यूएशन जो है हमारा निफ्टी का ठीक है, और निफ्टी तो पूरा बास्केट है, इसमें सारे सेक्टर है, ट्रू ट्रू। फाइनेंस है ना, एफएमसीजी है, सब कुछ है। तो आप आरएसआई 30 होता है, 50% पैसा आरडी से निकालो, लमसम डाल दो, और नीचे जाता है 25%, 25 पहुंच गया आरएसआई, बाकी का पैसा है 50% पूरा डाल दो। उसके बाद कुछ मत करो। 15,200 पे आरएसआई 30 टच किया था, मैंने इन्वेस्ट किया था और 18,800 पे बेच दिया, ट्विटर पे ओपनली बोला था, 23% का रिटर्न 6 महीने में मिल गया। हम्म। अंदर अगर सेलेक्ट कुलभूषण भाई, करेगा कुलभूषण तो भाई, मैं एक, सॉरी आपको इंटरप्शन करने के लिए, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे ना, जैसे मैं एक काम करता हूँ, मान लो सीवी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, इन्वेस्टमेंट आई मीन एडवाइजिंग क्लाइंट पोर्टफोलियो। देखिए, जब भी हम लोग ना इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, पहली बात तो we should invest only that money which we are not going to touch for the next 3 to 5 year, and if any drawdown happens in that money, it won't affect our financial stability. Two things, okay? So जिसके पास अभी पैसा है और मार्केट में उनको अच्छी डील मिल रही है, they must invest it. हाँ, those who are in tight financial situation, they can go for FD and they can follow whenever there is a sharp fall in the market. But those who are having money, they should invest, because when whenever there is a blood in the market and you have money, we must utilize. I still remember 2000, I mean, COVID fall, where the people have made money. Those who had, okay, so those who are having, they must invest. Those whose financial situation is a bit tight, they can avoid. Thank you. Please go ahead, Ghosh bhai. सो सज्जन सर, व्हाट यू सेड एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू सो मच। सो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी एट द एंड ऑफ डे इक्विटी इज ऑलवेज रिस्की, एवरीबडी नोज अबाउट इट। सो डेफिनेटली
it's based on the risk appetite for every individual and based on the age, obviously. But what, as Sunil sir has told me that what could be the way that we should suggest to the retailer. So that's what I told you about my way of investing, and which I have seen that if one will follow it with discipline, definitely it will give them the wealth, because you are always buying the equity when everybody is selling it, or it is, you can say, the discount price basically. And obviously this money also be the same money that, as you mentioned Sajjan bhai, that you can hold for 3 to 5 years. So definitely it is the way. And I'm telling you sir, Fed जो है यूएस में, उसका काम ही ये है कि कंट्रोल करना है इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल। अभी वो उसकी हवा टाइट है, दुनिया में थू थू हो रही है उसकी, समझ नहीं आ रहा उसको कैसे हैंडल करे। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, इंटरेस्ट हाइट बढ़ाएगा। इंटरेस्ट हाइट हाइट बढ़ाने की वजह से क्या हो गया, बॉन्ड यील्ड कब हो गया। और ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है, 40 ईयर का बॉन्ड यील्ड हाई हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी जैसे 2 दिन पहले आप देखोगे तो दुनिया में उतने शॉर्ट्स पड़े हुए थे केवल मार्केट के अंदर, मतलब शॉर्ट्स इन द सेंस, मैं ओआई की फॉर्म में बोल रहा हूँ, मुझे और डिटेल में नहीं पता, बट हर जी आदमी जी। को लग रहा था गिरेगा गिरेगा गिरेगा, नहीं गिरा। अभी पहुंचा दिया देखो 40 ऊपर बैंक निफ्टी, और निफ्टी 17,200 टच करा दिया। जब सब ये भूल जाएंगे ना कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इवेंट हो गया, देखो अभी आज भी यूएस मार्केट 400 पॉइंट ऊपर है। ये एक दिन में ही ऐसा गिरा देंगे ना, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये मेरा मानना है। आई माइट बी रॉन्ग कंप्लीटली, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, बट अभी आप अपना 10% 20% डाल दो। अभी भी आरएसआई बहुत नीचे ही थी, अभी 31 के आसपास आई थी जब 16,850 आया था। रैली ऊपर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं लगता ये पूरा ईयर कंसोलिडेशन का ही है, ऐसे ही ऊपर नीचे रहने वाला है। I personally do not found anything good the market should go up. This is my opinion. I might be wrong. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for your views. So I guess Sajan bhai, abhi, like we can summarize what we have, discussed so far. So we had a word with Vishal bhai, we had a word with Arush bhai, we had a word with Harsh bhai. I guess everyone seems to be suggesting that the market is not looking good, it is looking bleak, and abhi retailers लोगों को long नहीं करना चाहिए, and like the situation is not looking that rosy. I mean, दैट बीइंग सेड, आई वुड से कि अभी चलो ठीक है, ये तो मान लिया जाए कि डाउ थ्योरी के हिसाब से और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से और ईएमएस के हिसाब से मार्केट इज लुकिंग बेरिश, बट आई गेस from the broader perspective, the people who are investing, the retail investor, I guess they can start investing through nifty bees, which is what I do. I mean, the only thing which I do is the passive investment through the nifty bees and the swing trading, which all of you know, and I share the charts on chart mojo and my own Twitter handle. And the third thing which I do is the option selling positionally. Okay, so अभी मुझे लगता है कि अच्छा टाइम है, और आई डेफिनेटली कंकर विथ व्हाट यू सेड सज्जन भाई कि अभी लाइक when there is blood in the market, people should go and like invest, and that is a situation which I also see. So I guess this would be the right way if people could go out in the market and buy nifty bees and invest the money through passive ways. What do you say, सजन भाई? लगता है सज्जन भाई का वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, कुछ ट्विटर में प्रॉब्लम आ हाँ रहा Yeah, हाँ yeah, हाँ yeah, हाँ। yeah. Yeah. Sorry. Now, yeah, it was. Yeah, Krish is there. Hi, Krish. या Hi, Sajjan सो bhai. सज्जन भाई, क्रिश इज देयर, एंड आई गेस अभी हमने देखो फंडामेंटल व्यू ले लिया, टेक्निकल व्यू ले लिया, एंड आई गेस क्रिश सीम्स टू बी सजेस्टिंग और सीम्स टू बी seeing that like he does algo trading, and he is very much active into the derivative segment. So क्रिश भाई, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि अभी एल्गो क्या चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्योंकि सी इफ यू सी द वॉलेटिलिटी right now, the realized volatility is way higher than the implied volatility by going from the perspective of the like the derivative market data points. So what is happening with algo trading system, and how do you see the derivative space panning out, and how do you see all the algos, like the sideways trending algos and the trend market algos, and how do you see them panning out?
There is no trend in the market right now, and even in intraday, we are not seeing clear trends also. And this Mhm. volatility is playing out from last 3 to 4 months. But I don't Correct, think so. correct. This is going to be cool off for next 6 months or so. We need Mhm. some kind of fundamental reason to get out of this wide range, either on downside Mhm. or on upside. And not based on the technicals, I also believe into these fundamental things. Right now, too much of distribution is happening over the higher end of the range. So until Correct, these correct. issues not sorted out, it's tough time for algos as well, investing as well. Okay, okay. So yeah, thanks for your view. Yeah. Thanks for your view. Sajjan bhai, yes, सुनील you can सुनील go on. भाई एक सवाल And पूछूं भाई? Krish, how do you wanna play this kind of volatility? You want to play intraday pure or positional No, by seeing the I current can tell you volatility? in two ways. So before I'm coming into the algo trading, I was a discretionary trader. And till date Mm-hmm. also, I haven't stopped my discretionary trading. I do in couple of accounts because if I'm not doing discretionary trading, I might lose edge on the intraday trading because that will tell the actual price action, actual theory, what is happening in the market. So that's how I play. Based on that, I use my techniques in intraday to do the pyramiding and to do the position sizing, increasing or decreasing, whatever it should require based on the volatility. Okay, okay. Nice, nice. Yeah. So yeah, Sajjan bhai, you can go on if you have any questions. Yes. So, 1 second. I was punching some water in SGX Nifty. Sorry. Okay. So just sold at 17,170. You Okay. sold at Fine. 17,170. 170. Yeah. Stop loss of 70 Don't point. bother about this, Daurali. This is not at all going to be sustainable. and Okay. SGX Nifty, whatever it indicating, in real market, it will follow the Nifty only. No need to bother about that. As per the price action, it is showing the downtrend still now. Maybe it's not a downtrend. It might consolidate here in these zones only, and in this 300 points range. Shall I Yeah, yeah, yeah. shall I tell you one Tell thing? me. Making money is much better in SGX Nifty than Nifty, because Nifty used to give SGX Nifty opens at 6:30. Hmm. Okay, so we can initiate the position as per we can adjust our position as per the world market Hmm. so much Hmm. early. Once market opens at 9:50, it is very late. 50% of the mal has gone. चलो मैं I'm telling you, this is my personal एक experience in SGX Nifty. एक महीने के बाद मैं सिंगापुर जाऊंगा, पैसा मेरा अकाउंट में ट्रांसफर कर लो. मैं उधर से हेल्प कर लूंगा, आप इधर से खेलो. No, actually, what I'm doing is he's my friend. He's staying in Singapore. Okay, Okay. so I'm just doing for him only. Okay, so if someone is listening, okay, and you have the access to SGX Nifty, kindly do open account in SGX Nifty. Definitely, you will make money much better than our Nifty. सज्जन Chances भाई are more. And one question which I had, क्रिश Yeah. भाई, सजन भाई, Hmm. इनसे एक क्वेश्चन था. Yeah. Huh? अगर क्रिश भाई, अगर आप देखोगे अक्टूबर से, हाँ. so basically we also have our own algo trading system. So I mean, I mostly believe into objective trading Okay. than to be a subjective trader. Okay. So if you see algo trading system, अक्टूबर से जैन तक सारे एल्गो सिस्टम ने, मतलब आई वुड से किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया. अगर आप ट्रेंडिंग देख लो या फिर साइडवेज देख लो, तो आपको क्या लगता है? सी बहुत सारे लोगों को लगता है कि एज चले गया है, या फिर ये जो ड्रॉडाउन आया है वो यहाँ से और ज्यादा हो सकता है. तो आपको क्या लगता है कि मतलब व्हाट इज योर व्यू करंटली? क्योंकि अगर आप देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, so I am talking about my algos. So we have trending algos and we have sideways market algos as well. हमारे algo ने did not perform well since October till Jan. Okay. Feb से थोड़ा like we could see algos performing well. So what has been your performance from the October to the period of Jan, and how do you see algo panning out from now onwards in the forthcoming trading sessions? So till last February end, my algo trading was very going very well, and in last October, Okay. November, December, most of the month, my algos performed more than 4%.
and Okay, the okay, okay. return should be around 17% in last 4 months. This month only we are seeing 4% drawdown. And why this is Okay, happening? okay. Because of wide price action in the option behavior. On the one side, Mm-hmm. I can maybe you might say I'm cursing somebody. Say I don't like the way mutual funds are pumping the money into the market, because they are not letting I the guess market we to have go lost down. They him. are Mm. pumping the market at money in market at any price. So because of that liquidity, market is not going anywhere. That is one kind of a Correct, bigger correct. issue which we are seeing. Actually, people are saying we are outperforming the world, and I can say in simple terms, if you take the dollar in dollar terms, when Mm-hmm. Nifty was at 15,200, USD INR was at 76, and right now it was at 82, 83, and today we are at Mm-hmm. 17,000. The net in Nifty appreciation is around 12, 13%. In dollar terms, we have depreciated another same 12, 13%. So net we are on zero level. True, true, true. Yeah, but this month seems to be faring out well, and I guess this month we are positive 6% Oh, on the algo trading okay, system. But again, yeah, I mean, I can see the realized volatility way higher than the implied volatility, which is exactly. getting stopped out people on the long side, which is getting stopped out people on the downside as Exactly. well. So I And guess, how I am yeah. protecting my systems, mostly what I am doing, Mm. as per historical data, we have a trending days on Fridays and Mondays, mostly on Mondays. After that only, we will Correct, get the correct. trending moves in expiries. So according to that, Mm-hmm. what I will do is, I can take 100% directional bets on Monday and Friday. Rest of the days, Tuesday and Wednesday, Thursday, I can make 50-50 position, 50% sideways, 50% direction, according to the market Mm-hmm. condition. And on expiry days, I might take this kind of a re-entries based on the market Okay, okay. volatility. It depends, but Yeah, but but the problem here is in last 3 months I have never seen this kind of Mhm. a portfolio SL hunting thing. See, we Definitely, got three definitely. times, not one time, in intraday portfolio SL hunting in 3 months of time. It is Mm-hmm. never happened in prior history. So that's how it's Mm-hmm. just differing the algo trading as well. It's not only happening with me; it's happening with all over the places of the traders. And one more thing I am listening, this thing uh, in last 1 year, the 920 straddles, whether it's Mm-hmm. 920 or you can take it 930, 940, 10 o'clock, whatever it might be. The straddles itself they are Mm-hmm. playing in intraday, which is worth around 30,000 crores in Definitely. intraday. The order is very Yeah, huge, yeah. correct? If that kind of a massive money is pumping into these kind of strategies, obviously institutional Mm. players can do some kind of a drama. Very true, very true. Yeah. So we need to sort out all these things. Anyhow, whatever the volatility, implied volatility we are getting, we need to adapt those systems. We need to move forward according to the upgradations. Yeah, Yes, exactly, and exactly. we can sell Dow Jones also. Okay. I guess Arush will be able to understand this thing very well because he has done CMT, and we are taught in the CMT that you have to go with the market direction, and you have to be like Dhoni. So if the markets are trending downside, you have to go short, and if the markets are trending upside, you have to go long. But one thing I've seen, Krish bhai and Sajan bhai, you can also comment on this, and Vishal bhai, by the way, which is a option buyer. एक चीज मैंने देखा है कि यार ऑप्शन बायर हैज been into the biggest pain period over the last 1 year. I mean, I have seen many traders who have not been doing so well on the option buying side. What do you say? Because option buyer के बोलना नहीं चाहिए लेकिन लगे हुए हैं by the way, because most of the option buyer, if you see, like, they are into drawdowns, and Sajjan I Bhai mean. was an exception for that, if I'm not wrong. Nee, 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 nee. I'll tell you on this. Okay. See, uh, as an option buyer, na, I'm telling you very Hmm. honestly, Yeah, yeah. if you want to sustain in the market and want to make money in the market, okay, you have to keep lot of patience. Don't enter in the market on daily basis. ऐसा नहीं हो, don't think like a labor. Okay, मेरे को रोज काम करना है, मेरे को इतना निकालना है. Think like a businessman. If I'm getting a good deal, then only I'll enter that execution. If I'm not getting, I'll wait. I'll wait on sideline. If you think like this, definitely you'll make money. And
I am net positive along with my client. I am running one trading club also for option buyers. Okay, net we are positive because we don't enter daily basis. Okay, and think Correct. every option buying entry as a deal अच्छा नहीं है मत करो कल करेंगे. This is the main approach which is keeping me alive. See, I'll tell you one thing. See, what happens is ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है कि उसको पता नहीं चलता है कि कब मार्केट ट्रेंड करेगा, वो टाइम पे उसको ट्रेड करना है, और कब मार्केट रेंज बाउंड होगा. सी यही तो गेम है. डेफिनेटली डेफिनेटली. सो सचिन भाई मैं कुछ बोलूं क्या? बहुत देर हो गई, मैं सो बोलना चाह रहा था। बोलो सॉरी बोलो टू, बोलो बोलो बोलो. बोलो बोलो बहुत सारी चीजें हैं। देखो भैया, 4-5 चीजें हैं और मैं इसके बाद चला जाऊंगा, फिर आप लोग डिस्कस करते रहना। और प्लीज मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है, ऑफेंडेड मत होना कोई भी। पक्का पक्का बोलो बोलो. एक तो सज्जन भाई, ये सिंगापुर में दोस्त हैं किसी के, मेरे भी, आपके भी, कृष के भी, तो ये फील्ड क्लीन हो जाए उसके लिए क्लियर हो गया, हमारा भी खुलेगा मार्केट इंडिया में, तो टेंशन नहीं है ना। Okay. तो अभी ये शायद अब जल्दी होने वाला है बहुत, क्योंकि अभी आपने देखा होगा गुजरात में जो आए थे सीईओ साहब, उन्होंने क्लियर बोल ही दिया। या एफएसएसटी या. हाँ। दूसरा मैंने आपका सुना था अभी, आज आप शायद 17 समथिंग का कुछ कॉल, कुछ बेच के गए हो या सेल करके, मुझे पता नहीं। तो मेरा एक सजेशन है, मैं बहुत दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। थर्सडे में जो मार्केट का क्लोजिंग होता है ना, ये जनरली बड़े प्लेयर अपने पोजीशंस के हिसाब से क्लोज करते हैं। तो बेटर ये है कि आप अगर इतने दिन ट्रेड कर रहे हो ना, कोशिश करना चाहिए, अगर इफ यू आर रियली स्ट्रांग अबाउट योर एनालिसिस तो अलग बात है, अदरवाइज थर्सडे के दिन खाली जाओ एक दिन शांति से, फ्राइडे के दिन अलग से अपना फ्रेश व्यू बना लो। ये एक मेरा मेरा सजेशन है। नहीं अब आप एक बात देखते हो ना. पहली हाँ बात तो आप 100% राइट हो कि देखो वीकली बेसिस पे जो पोजीशन है ना, ठीक हाँ है, वो लोगों ने आज जो एक्सपायरी में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पोजीशन लिया था. ठीक हाँ है, हाँ हाँ राइट किया था. तो कल जो होगा ना वो बिल्कुल फ्रेश ही जाएगा मार्केट है, ये आप 100% हो. ठीक है, एब्सोल्युटली। लेकिन आप एक बात देखोगे ना, अगर मेरे को पोजिशनल में अगर सपोज करो बाई 2 PM मैंने निफ्टी शॉर्ट किया है लेट्स से 17,100 और मेरे को 100 पॉइंट का क्वेश्चन मिल रहा है एट 315, देन आई लव टू होल्ड द पोजीशन. अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है देन आई वुड लव टू एग्जिट, नेक्स्ट डे एंटर करेंगे. करेक्ट आप सही हो बिल्कुल 100%. करेक्ट करेक्ट, ठीक है। दूसरा मैं अभी सुनील भाई का आंसर देना चाहता। सुनील भाई देखो, जी जी बताइए. मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सीनियर लोग हैं ट्रेडिंग में, आप जैसे बड़े बड़े, लेकिन जैसे अभी सज्जन भाई ने बोला कि ऑप्शन बाइंग में भी ना ऐसा, यही एनालिसिस करना है कि कब मोमेंटम आ सकता है। बहुत सारे पेड टूलों में ना, जैसे आपका भी अपना एक कंपनी है, तो आप भी बहुत अच्छा रिटेलर्स के लिए इंफॉर्मेशन देते हो, ऐसे और भी पेड टूल हैं जो थोड़ा मोमेंटम को ना आपको इजी टू अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और जो अपनी नॉलेज को रिफाइन कर रहा है एवरी डे, नॉट ए बायर, सेलर एज वेल, इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। मार्केट डायनेमिक्स चेंज, यू नो वेरी वेल, एवरीबडी नोज। ट्रू ट्रू. वेरी हमको ट्रू. अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या है ना, ये जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना घर में, किसी भी एज बड़ा है हमसे, है अगर एज में, चाहे वो बेवकूफी हो, चाहे वो बदतमीजी हो, लेकिन हम उसको वेरी इज्जत ट्रू. करेंगे, पैर, हम उसको पैर पूछ के इज्जत करते हैं। शेयर मार्केट ऐसा नहीं करता कि तू 10 साल का पुराना एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो तेरी इज्जत करूंगा, तेरा स्टॉप लॉस लूंगा। घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई ऐसा। हो सकता है 6 महीने का बच्चा नया आके एनालिसिस करके बढ़िया हमसे अच्छा ट्रेड कर दे। तो पहले तो ये दिमाग से में गलतफहमी निकाल दो कि जो ये अभी अभी आए नए 2020 वाले कोरोना वाले ट्रेडर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत आईटी इंजीनियर्स आए हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, और उन्हें कोडिंग पावर स्किल्स भी होती है, डेटा चंकिंग करनी भी आती है, डेटा एनालिसिस करनी भी आती है। जो जो पहले पुराने ट्रेडर थे जिनके पास बहुत पैसा है, वो शायद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी कंपनी से वो हेल्प ले रहे हैं। तो आई रेस्पेक्ट टू एवरीवन, बट मुझे लगता है बायर हो सेलर हो, सबको रिफाइन करना पड़ेगा। मेरी जैसे भी सज्जन, जैसे अभी अब कृष भाई ने बोला इनकी एल्गो चल रही है, मेरी भी एल्गोज है। हर मंथ 3 to 4% का रिटर्न बना है, एक भी महीने ड्रॉ डाउन नहीं है पूरे साल में। जी जी थोड़ा जी. थोड़ा चंक करना पड़ता है, अब आप जैसे कह रहे हैं। और दूसरी बात ये वॉलेटिलिटी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि अब मार्केट 18,000 हो गया निफ्टी, सपोज ओवरऑल मोटा मोटा, तो 180 पॉइंट ऊपर 180 पॉइंट नीचे 1% हो गया केवल। सही बात. अब इसको अगर आप 9-10 हजार जब निफ्टी था तब आप बोलोगे, तो लोग बोलते थे, "अरे यार 90-100 पॉइंट में आराम से मार्केट पूरा दिन काट देता था।" तो वो 90 पॉइंट भी 1% था। आज 180 पॉइंट ऊपर 180 पॉइंट नीचे भी 1% है। तो ये हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी हो सकता है कुछ महीनों के लिए शांत हो जाए, बट ये रहेगी, कम नहीं हो सकती। क्योंकि अभी क्या हो गया, जैसे बैंक निफ्टी ज्यादा मूव होता है क्योंकि वो 40,000 का है,
तो उसमें आप देखोगे 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे 800 पॉइंट की रेंज 1% हो गई। ट्रू तो ट्रू। ये बात सही है। तीसरी बात अभी वो बोल रहे थे क्रिश भाई, आई नो डायरेक्शनल ट्रेडर या स्ट्रेडल के लिए बड़ा पेन है कि ये एफआईए आते हैं बेच जाते हैं और बेचारे म्यूचुअल या डीए आके बाय कर लेते हैं। अब क्या करें म्यूचुअल फंड में, सज्जन भाई तो हमारे सर्टिफाइड है, ये इनको ज्यादा पता है। म्यूचुअल फंड में ना एक लिमिटेशंस है, वो कैश नहीं रख सकते अपने घर पे। ट्रू अब ट्रू। हमारे पास रॉबिन हुड इन्वेस्टर है भाई, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लड़के अच्छा पैसा कमा रहे हैं, समझदार हो गए हैं, घर नहीं लेते, गाड़ी नहीं खरीदते, ओला ओला उबेर से चलते हैं, रेंट पे गाड़ी लेते हैं, रेंट पे रहना चाहते हैं, वो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में। तो उन्हें लगता है अभी आया अब तो बॉटम बन गया, अब तो बॉटम बन गया। उनकी एसआईपी चल रही है दबा के, बढ़िया बढ़िया। तो म्यूचुअल फंड के पास पैसा है, वो क्या करें बेचारे, उन्हें तो लेना ही पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है म्यूचुअल उनके फंड तो में हाथ बंधे एसआईपी के हुए हैं, साथ। उनके तो हाथ बंधे हुए हैं बाय द यस। वे। अब ये एक प्रॉब्लम है। अब मुझे नहीं पता, देखो मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि इसके लिए सेबी कुछ कर सकती नहीं कर सकती, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेरे पास पैसा है, मुझे पता है आलू सड़ा हुआ है, फिर भी मुझे खरीदना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो म्यूचुअल फंड को पैसा दे दिया, वो तो बड़े स्मार्ट हैं। अरे भाई उनकी मजबूरी है, वो तो अंधे हैं, धतराष्ट्र की तरह बैठे हैं आंख आंख पे पट्टी मार के, उनको नहीं 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 नहीं, पता कुछ भी एक मिनट एक बेचारों मिनट, को। एक सेकंड कुलभूषण भाई, एक और बात है। अभी देखोगे ना, ये महीने में ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड कैश में आया है, क्लोज टू 12 to 15% है ये महीना स्पेशली। ये बात ध्यान देखना आप, नहीं सही रिपोर्ट बोल है। रहे हैं। वो अभी जो हमारे बहुत सारे जो यहाँ अभी जो टेक्निकल एनालिस्ट थे और जो थोड़ा नॉलेज है उनको, उन्होंने बताया ना अभी कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो शायद नीचे आए हैं, 2020 के भी नीचे आए, जैसे बायोकॉम देखो, बायोकॉन है अभी कोविड वाला जो फॉल था उससे भी नीचे आ चुका है। तो ऐसे और भी शायद बहुत सारे शेयर्स होंगे जहां पे कैश बाइंग हो रही है। आई एग्री, और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है कि जिनको नॉलेज है, ये टाइम है उनके लिए। जैसे अभी इन्होंने बोला था ना कि इंडेक्स इज नॉट द ओवरऑल मार्केट, किसी ने बोला था, सही बात है। हम लोग जनरली बड़े इंडेक्स को हिसाब से सोचते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक आज भी ऐसे होंगे जो आने वाले 5 साल में मल्टी बैगर बनेंगे फॉर श्योर, जिनके पास वो नॉलेज है, जो वो उतना डेटा एनालिसिस कर पाते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, वो डेफिनेटली परचेजिंग कर रहे हैं। आप सही बोल रहे तो हो। थैंक यू सो मच, क्या बोलते हैं, आपका व्यू के लिए कुलभूषण भाई। तो एक चीज मेरे को पूछना है, आई डोंट नो हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो सजन भाई यू कैन आंसर, विशाल भाई यू कैन आंसर। अगर कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है, तो ये मैं क्वेश्चन सारे रिटेलर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए पूछ रहा हूँ, कि अगर कोई ऑप्शन बायर है और वो, मुझे पता है कि ऑप्शन बायर के लगे हुए हैं लास्ट के जब से मार्केट करेक्टिव फेज में है, क्योंकि आपको ट्रेंड मिलता ही नहीं है, या आप ऊपर के साइड स्टॉप आउट रहेंगे या फिर आप नीचे के साइड स्टॉप आउट रहेंगे। तो अगर कोई ऑप्शन बायर है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये दिन मेरे लिए ट्रेंडिंग रहेगा, तभी मेरे को ट्रेड करना है, और वो कौन से डेज को रिमूव आउट कर सकता है कोई इंडिकेटर को या फिर कोई टूल को यूज करके, कि अब मार्केट रेंज में है, अब मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अभी मार्केट ट्रेंडिंग है और अब मुझे ट्रेड लेना चाहिए। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? विशाल भाई। हेलो। जी जी बोलिए। यस यस यस। तो पहली चीज तो एज अ मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि पिछले लास्ट 2-3 मंथ से मार्केट मतलब फुल लगी पड़ी है, राइट। लगी तो पड़ी है पढ़ाई। हाँ जी जी राइट। जी। तो बेसिक, हाँ तो इसका मेरा एक ही सवाल है, मतलब आंसर है, ठीक है, एक ही आंसर है कि अगर ऐसा मार्केट हमें दिखाई दे रहा है कि न्यूज बेस्ड है कि अभी अडानी का आया, फिर बैंक का आया, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक का आया, फिर अभी आगे चलकर ये फेड का आया, ठीक है, और भी आगे चलकर ऐसे कुछ इवेंट्स, मेजर इवेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। सो जब भी ऐसा कुछ 2-3 चीजें हमें दिखाई देती है और मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड है, और अगर विक्स जो है, इंडिया विक्स है ना, वो अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली जा रहा है जब मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो हम्म। एट दैट टाइम थोड़ा सा केयरफुली रहना है। पिछले 2-3 महीने से मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनली मैं ना एक इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता, ठीक है। हम्म। निफ्टी ना बैंक निफ्टी, पर्सनली थोड़ा सा मतलब बैंक निफ्टी कभी कभी करता हूँ, मतलब ऐसा रेगुलरली नहीं करता। तो मैं ज्यादा प्रिफर करता हूँ स्टॉक ऑप्शंस। तो हम्म। स्टॉक ऑप्शंस में आपको है ना समझ में आता है कि अगर समझो कोई स्टॉक है, कोई पैटर्न फॉर्म हुआ है, किसी में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, जैसे कि हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं ना, तो जब आप स्टॉक स्पेसिफिक जाते हो, जैसे आपको है ना सिंपल है 20-30 स्टॉक देख के एक लिस्ट निकालना है, ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टॉक्स आपको मतलब देखना है। आपके जो रेगुलर 20-30 स्टॉक्स है उसको ही ट्रैक करना है, पहली चीज।
तो अभी आप जैसे जैसे आप उसको ट्रैक करते हो ना, तो आपको आइडिया आ जाता है कि कौन सा इसमें कब स्ट्रेंथ आने वाली है, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो आपको है ना, ऐसा नहीं है जैसे कि आई थिंक क्रिश भाई ने या किसी ने तो कहा था कि, हाँ क्रिश भाई ने कहा था कि आपको है ना, ऐसा नहीं है कि रोज ट्रेड ही करना है, पहली चीज ऐसा जबरदस्ती तो नहीं है। और ये फेज है, सबको पता है कि ये मार्केट का अभी थोड़ा सा मतलब बेरिश फेज है या ऑप्शन बायर का फेज नहीं है। तो जब ऐसा फेज आता है ना, तो सिंपल कुछ अवॉइड करना है, कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना, ऐसा नहीं है ना। मार्केट यही है, हम भी यही है, आगे चलकर हमें और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ये 2 3 महीना अगर, या 4 महीने 6 महीने, अगर 1 साल भी जाने दो, ट्रेड नहीं करोगे तो आप मतलब कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपके पास ही मार्केट है, और ये फेज कंटिन्यूअसली ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला है, पहली चीज। तो ये फेज निकल निकल कर जाएगा, पहली। फिर उसके बाद आपका ही मार्केट है, और हमें क्या चाहिए, इस स्टॉक में से 8 दिन में 15 दिन में एक भी स्टॉक अगर मिल गया। और मेरे कुछ पर्सनल रूल्स भी है कि मैं फर्स्ट 2 वीक्स ही ट्रेड करता हूँ। अगर फर्स्ट 2 वीक्स में ही अगर कोई स्टॉक्स में अच्छा मूव आया, और लास्ट के जो 2 वीक्स है ना, उसमें तो आप कितना भी करो है ना, प्रीमियम डायलूशन का, थीटा डीके, ये तो प्रॉब्लम होता ही है। सो फर्स्ट टू एग्जैक्टली वीक्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ तो 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 मेरा क्वेश्चन सटीक ये था कि ऑप्शन बायर को कब ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसका कोई आपके पास में ऐसा इंडिकेटर है जो आप यूज करते हैं, उसके बारे में मैं पूछ रहा था। और आपने थोड़ा बहुत बताया कि आपका रूल है कि स्टार्टिंग के 15 डेज। सो दिस इज अ सटीक आंसर। तो बताइए बताइए, कंटिन्यू। हाँ राइट। तो पहले 15 दिन आराम से देख लो, अगर किसी स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा वोलेटिलिटी दिखाई दे रहा है, अगर आप भी देखोगे ना आज भी, तो बहुत सारे निफ्टी के। Hello. So I'm a pure option buyer. Yeah, I'll yeah, guide you. Sajan bhai, I guess you are the, like right person to answer this question. Yeah. And Please, and and please. and at the same time, I feel you can also give us an objective. See, what I want is for the retail people who are listening to us, 337 people are listening to us right now, and many Yes. of them might be doing option buying. See, I want a concrete answer as to when a person should do option buying and when a person should avoid doing option buying. The question is that. Yes. So as a option buyer, okay. Hmm. First of all, we have to understand the main trend, main context of the market. Okay. First Hmm. of all, very Hmm. important. So for this, as a retail trader, what you can do is you can draw EMA 40 on daily chart. EMA Okay. 40 on daily chart. Mhm. If daily chart, I mean daily closing is above EMA 40, then you should be in buying side only. You do the call side entry, and if it is trading below EMA 40, you should Okay. keep on doing only P entry. I'll tell you the very live example also. Okay. Okay. If you see from 15th of December, Mhm. not a single day the Nifty have closed above EMA 40. I think only oh sorry, not a single day. So if you trade with the main trend, okay, Mhm. so the chance of making money is close to 70 to 80%. Don't take a contra trade as a retail Exactly. investor. I'm telling you. Mhm. Second, if you are facing that market is dull and it is range bound, then go for bit higher time frame, go for hourly chart to hourly chart. So Okay. if you trade with the longer time frame, and if you trade with the main context, main trend, by drawing EMA 40 on daily chart, Okay. okay, Okay. definitely you can remove lot of fake entries, okay, and chances of making money is quite high. This is I'm practicing, and since many years. Yeah. Thank Yeah. you. Okay. So exactly. So thank you so much, because see, I wanted an answer which can be very objective. See, because we always look for the objective answer, and because see, subjectivity बहुत सारी आ जाती है. When you do trading, कोई cup and handle देख रहा है तो कोई ascending triangle देखेगा. So I wanted an objective answer, and thank you so much that you gave an answer to this.
So yeah, so now I guess we can take up few questions which people have, and then we can call it the day, because we had a like great discussion around the market views, the like the world market as well. We talked about that as well, and what one has to do with the option buying, what one has to do with the option selling, and we have covered the wide range of spectrum, I guess. So I guess we can take a few questions, people's question, and then we can call it the day. What do you say? Divyanshu is with us. Okay. Yeah, Divyanshu, your view after the US Fed rate hike. What kind of context you are seeing I trend in the think he was market? about to say something about option buying. Yeah, please go ahead. Okay, okay, Yeah, so definitely. yeah, hi, good evening, guys. So what I think is, like, last week also, like, we were discussing this, and I said that we are forming a base somewhere, right? So I think, and base formation takes some time, but I believe that eventually we'll have a breakout and will continue to move up only. And because it's a very solid base which is being formed, and what we can look out for on index is a W pattern on a daily time frame. So once that is seen, I mean, we can go aggressive long. So as Okay, of okay, now, I hold put shorts because puts are under distribution. If you look at monthly puts or anything for that matter, they are under distribution right now. okay, okay. Okay, so Sajan bhai, I got a question for you. You said that an option buyer should only go long when the Nifty is, see, because I'm only talking about index option buying. I'm Yes, not yes. talking about the stock option buying, because that is different, all, like altogether different ball game, because over there you can see few stocks into good momentum and you can do option buying into them. I am only talking about the index option buying. And you said Hmm. that if the Nifty is above 40 EMA on the daily time frame, we can do option buying. But see, option buying happens on the 5 minute time frame and the 15 minute time frame on the daily basis, correct? Correct. Because taking a positional trade into option buying on the index, I don't think so many people would be doing that nakedly. People would be doing bull call spread, or people would be going into ratio spread. But I don't think so most of the people would be going naked into option buying, that too for positional. So I am talking about purely on intraday basis, using 5 minute time frame. At that point of time, what would you do? Because see, I mean, if the Nifty is about, let's say, above 40 EMA, okay, on the daily time frame, then on the 5 minute time frame you would just go and see any pattern, and if the breakout is happening, you'll buy the index. What would you do? See, if you want to do intraday, okay, if you Hmm. want to do intraday, look for a kind of consolidation for around 30 to 45 minutes. Okay, once you see the breakout or breakdown from that range on 5 minute and 10 minute chart, you can go with that trend. But you are doing only scalping. Kindly don't look for 1:5, 1:6. This one, if your SL is, let's say, 20 point, so kindly look for max 40 point. Okay, so if you are doing breakout or breakdown from the range kind of entry, definitely you can use the short time frame. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay, okay. So, but right now, as we can see, the Nifty is below 50 EMA or 40 EMA, you could say so. Correct. So right Correct. now, one should only take option buying positions on the short side. You are saying, right, on the 5 minute time frame, or beat anything. No. I'll tell you the exact picture. Okay, Mm-hmm. if you are trading 3 minute 5 minute, this kind of scalping time frame, Okay. no need to look for the trend first of all. Okay, because you are going to enter very just for 5 or 10 or 15 minutes. Okay, so no need. You need is a trending after the breakdown or breakout. But if you are working on higher time frame like 30 minutes or 1 hour, then you have to look for daily charts also, the main context of the market. So I always follow. I I'm not a scalper. I use a minimum 1 hour chart to for entry. So Mm-hmm. for me, trade as per the main trend, main context is very important for me. By this, I can save a lot of money. Okay, okay, Yeah. making sense, making sense. Okay, yeah. So thank you so much. I guess we have Keshav as well, and Keshav, you have something to add as to Okay. like. So after US Fed rate, what how you see the the structure of the market, the context in the market. Keshav, are you there? Some mic issues, I think.
Yeah, I guess he's not able to speak in. Yeah, so now, Sajanji, what we can do, we have had a long discussion on wide range of spectrum, so now we can take people's question, and we can do that, and then we can, like, we will be done. What do you say? Yeah, Correct. actually, Keshav is facing some errors on the space, so like I don't think he'll be able to speak. Okay, okay. So Sajanji, now you can, like, there are 12 requests pending in the space right now. So you can like, accept the request, and let the people talk in, and these people can ask their question, Yes, and yes, then we yes. can Just do. one second. Let me accept that. Mm, no, I'm not able to see these requests. Are you able to see from your side? Yeah, yeah, yeah. I am able to see. I am able to see all the requests from my end. There are 11 requests pending. So, Please I. accept that. Okay, okay. Mm. So, Yogesh Kashyap's request I have accepted. You can ask your questions if you have any questions. Meanwhile, if anyone wants to speak anything, they can put up their views, and they can They, talk about. there is a question from Dr. Punit. Okay. Anything about hedging our portfolio by option buying? So he want to hedge the portfolio by buying option. I mean long term option. So how you see this, Sunil bhai? Can we Mm-hmm. do that? Okay, so you are asking me this question, correct? Yes. So I'll tell you, like, I never do option buying. So I'll tell you, my co-founder, his name is Devraj Bashne. He's an option buyer. I never Okay. do option buying. The only thing which I do, so I do three things. I do, the positional option selling, and I'll tell you openly. I do ratio spreads. I do bull call spread. I do iron fly. That's all. On the swing trading side, everyone knows what I do. I put up my charts in front of everyone on the chart mojo and on my personal Twitter handle. Hmm. This question would be very well taken up by Krish, I guess, because he is a strategist, okay, and he might be, like, hedging all his portfolios and doing up that particular thing, so he can, I guess, take up this question, Yeah, because Krish, I, go I ahead. I don't do option buying because that is So a he Yeah, different. Krish. wants to hedge his position through option buying with Long term, yeah, portfolio. Yes. Yeah, long-term yeah, yeah. portfolio, buy monthly options or December options. Which one? No, no. He want to hedge the portfolio, and he's asking how Okay, to do that by buying first he options. need to decide what kind of a portfolio he has built. He built it according to the Nifty or Nifty next 50 stocks or Nifty mid cap stocks. If it is Nifty mid cap stocks, then even if you hedge that position through Nifty options or Bank Nifty option, it's not going to help out him anyway. And if he is builded the portfolio in this large cap indices, then he can buy the options maybe in three months duration or 6 months duration, not at the money. Even maybe it is in 1,000 points in the money or 1,500 points in the money. So according to that, what he needs to do, he had to do the covered calls to cover that losses when it is going time by time. Premium gets eroded. So that's how I can do on my portfolio levels. Actually, I'll tell you. I use one parameter. I use a fear and greed And index. one So one 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 whenever, one thing I want to tell you: when you are building a mm, portfolio, look at the market mm, cycles. When all the global central banks are pumping the money into the market, then that is the time you need to be sit with the right stocks for the longer origin of period. Maybe it might be 2 years, 3 years, 4 years. We don't know what kind of a time frame it will be. Based on the weekly chart, he can put a. Hello, am I audible? yeah, Yeah, we are yeah. hearing. Go ahead. Audible, So audible. Yes, you yes, yes. don't You're need to audible. use lot many indicators. You can simply use it as super trend and RSI. These two indicators are enough. On a weekly time frame basis, whenever there is a strong reversal or on the breakout, you can stay with that indices stocks, and according to that, you can hedge your portfolio. You can book the partial profit when it is reversing. If it is not reversing, you can hedge your portfolio by using some kind of IDM option, maybe for 3 months of time, maybe for 6 months of time. Then you can sell the covered calls according to that. So in that way, you can protect your portfolio and you can run the long bull run. Actually, I use fear and
greed index for hedging my portfolio. Whenever the fear and greed index is in extreme, in green zone, I used to buy for out of the money around 4 to 5 months. Okay, 1% of my portfolio. And what I have seen is, by using this strategy is very much successful for 70% of the time. And this 1% hedging, many times it converted into 4%, 5%. That I have seen. Nice. Yeah. Nice. Okay, so yeah, everyone's point is well taken out, and I guess Sajanji, it's been 2 hours, more than 2 hours. We have been like talking and discussing. Yes, yes, Now, yes. now we can take a few questions, and then we can call it the day, if you say so. Yes, 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 yes. So we have this one. Pramod is there. Pramod, you want to speak? I think he's Missile. Missile. You want to speak? I think there is some issue with the Twitter. Every time it's not taking Yeah, further yeah, request. exactly. Very true. Like, I am able to, like, accept all the requests, and but the people are not able to ask their questions from there, and yeah, that is happening. That is there. That is there. Yes, yes, yes. And Yeah. So and guys, and, if you are unable to speak, you can post your questions in the comment section. yeah. One question is there. I'll read out. Being non-direction option seller, I found upside handling been more tougher than down move these days. Any suggestion for the same would be highly appreciated. So he found upside handling been more tougher than down move these days. Yeah. क्रिश भाई बताइए Can it, ये आपको बहुत अच्छे से पता है can you just repeat it again? I was unable to hear it. Yes, yes, yes. He was saying, Being he is a non direction option seller, okay. and what he's asking is, I found upside handling been more tougher than downside move these days. Any suggestion for that same? So the problem over here is why it's happening on the upside. We are getting lesser premium. One thing. At the same time, we are getting huge spike momentum, and today also all my call SLs got triggered, and it started coming down. In these kind of scenarios, what you can do is you can take the re-entry. That is the only way you can protect your capital. Even if it is hitting your stop loss, just divide your position into by 2, by 3, or something like that. Based on that, you can take the re-entries using the pyramiding technique. And of course, as he said, managing the put option is very much easy. Why? Because even the market is coming down, the put options are going down. So these kind of price behavior always hurt on the call side. very true, very true. And secondly, Krish bhai, on the put side, the IV will spike. Okay, so managing positions, if you have, let's say, sold put, and if you have sold call, then managing like put side options will be And very tough, because the IV will spike, and one thing I want to tell you, Sunil, here. So whenever future price, I am talking about future price, not on spot price. So whenever future price trades below VWAP, particularly in intraday, VWAP means not okay, around okay, closing or one candle which is open and low, both are open, high, low, and close. These three parameters was below of the VWAP, which is not touching the VWAP. In that scenario, you need to be cautious. Most of the times, okay. what So will so happen, so so particularly on 3 minutes. this has been your Yes, observation. This yes. has been your Yes, observation. yes. 3 minute chart, 5 minute chart, it's up to your whatever your comfort is. Whenever there is a Okay, candle close below VWAP, but not touching the VWAP, that candle is not touching the VWAP, the move okay, on the on downside velocity is very much high. I have seen this thing from last 6 to 7 months. So in that oh, kind of scenario, okay. you need to be careful. Today also the same thing happened. So the moment I have saw that thing, what I'm doing in the from the morning, I made 40,000 straddle, and then 40,100 straddle, 200 straddle. I'm just rolling down after that. After Okay, touching okay. 40,200, came to 40,000 again, 39,900 again. And it's simply moving down, and candle exactly it was closed below. And then I just trade off all the saddles. I shifted to the call side. Okay, So okay, this is okay. how we were able to save the positions, particularly in intraday. So I'm just designing some kind of system for that to place that into my marketplace strategies as well.
So I'm just working on that code. Nice to get your thoughts on the same. Yeah. I guess Sajjan Keshav, yeah. Keshav again speak. Keshav, Yeah. can you hear? Am I audible now? Yeah, Keshav, you're Yes, Yeah, audible. audible after a long time. Finally. So yeah, actually there have been some issue with Twitter Space, and Sajjan ji actually helped me with some technical issues. So I tried that method, and it finally worked. Coming to the markets, I guess people know me as a person who is a non-directional trader and who trades positional. And these kinds of market have actually made me into a directional trader with intraday thing. So that's totally opposite of what I used to be. So as of now, I guess there are two types of thing which I consider. That is, there is a thing called hard reset and a soft reset. Hard reset means completely shutting off the system. जब तक नहीं लगे कि now the market is stable or now the market is yeah. I Second, Okay. guess yeah. Some yeah, issues, yeah, yeah. some issues from Second it. approach is actually thinking कि जो भी capital से आप trade कर रहे हो, maybe reducing the capital, maybe to 50%, maybe to 30%, maybe to 20%, or whatever feels fit for you, so that you stay in touch with the market. And the third approach which I apply is a mix of these two. That कि मतलब एक थर्ड अप्रोच का मतलब नॉट एग्जैक्टली मिक्स ऑफ दीज टू बट कैपिटल को रिड्यूस करना एंड सेकेंडली नई स्ट्रैटेजीज नई अप्रोच को ट्राई करना एंड लाइक दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड विद मी अराउंड कोविड के बाद लाइक अगस्त सितंबर आया था तो एट दैट टाइम द मार्केट रिजीम वाज क्वाइट डिफरेंट एंड आई हायर्ड अ फ्यू पीपल फ्रॉम यूएस कि जस्ट मतलब दोज पीपल आर स्पेशलिस्ट ओनली इन दिस थिंग कि कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है कैसे स्ट्रैटेजी को संभालना है तो विद दैट विद दोज पीपल आई एक्चुअली डिस्कस्ड कि कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए एंड लाइक अराउंड 2 weeks back 3 weeks back I again sat with them I redesigned whatever I am doing so I guess evolving in the market is something जो कि ध्यान रखना चाहिए एंड पीपल हु आर वंडरिंग कि हाउ कैन वी बी लाइक evolving with the market और कि क्या करें नंबर वन या तो छोड़ दो ट्रेडिंग जब तक नहीं समझ आ रहा और फिर भी कुछ ना कुछ करना है मे बी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स एंड उसके लिए एक रेफरेंस के लिए एक बुक दूंगा जो कि इट्स वेरी गुड देर आर टू बुक्स वन इज सुपर ट्रेडर बाय वैन थार्प एंड वैन थार्प की सेकंड बुक है पोजीशन साइजिंग को लेके सो दीज आर द टू बुक्स जो कि मुझे बहुत हेल्प की है फ्रॉम इवन जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी एंड एवरी ईयर आई रीड देम और हर साल कुछ ना कुछ नया मुझे मिलता है सो दिस इज समथिंग व्हिच आई एम डूइंग एज ऑफ नाउ Okay, Keshav bhai, thank you so much. I guess Sajjan bhai, we can call it the day because we have had a long discussion on n number of No, topics. see, Sunil bhai, let it continue for another 30 minutes, okay? Then Okay, people okay. want to. ठीक है, no problem. So Yeah. you can carry on. Meanwhile, I can like just leave because I have got to go. So you can carry on from Thank there you, on. thank you for the thank you, Thank you. thank you, Okay. thank you. Bye bye, Sunil. Okay, Bye Pramod bye. is there. Yeah, Pramod, go ahead. हेलो हेलो Go ahead. Yeah, Pramod, Go go ahead. ahead. हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए. हाँ जी मेरा एक थिंकिंग है एक्चुअल में 2015-16 से फील्ड में आया हूँ Okay. मेरा एक थिंकिंग ऐसा है कि जो एफआईएस है एफआईएस ही चलाता है जो भी चलता है अपना मार्केट Okay. 7,500 600 से एफआईएस ने 17,000 18,000 में 10,000 पॉइंट का रैली लेके चले गया वो लोग 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का जो भी था माल अपना बेच के चले गया है जो पब्लिक इसमें खेल रहा है जो भी प्ले कर रहा है इन्वेस्ट कर रहा है यानी कि वो लोग कचरा भाव में स्टॉक लेके बेच के चले गया है अभी डाबर का स्टॉक चल रहा है 540 समथिंग चल रहा है जो भी है अभी सब लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करो ये करो वो करो वो करो लेकिन जब वो लोग बेच के चले गया है तो अभी यहाँ से स्टॉक कहाँ जाएगा जैसे बैंक 840 30 कुछ चल रहा है जो भी है अभी और इस पर अपने इंडिया में जो ये चल रहा है सब इशू चल रहा है बैंक का इशू ये इशू तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि डायरेक्शन प्ले करना ही बेस्ट है ये वो लोग जो एफआईएस आता है वो ऑलरेडी डायरेक्शन प्ले करता है वो लोग जैसे कि 2008 में जब क्रैश हुआ था मार्केट तो वो लोग 2000 मतलब ये बताइए कि आपको अभी जो मार्केट यूएस फेड रेट हाइक हुआ उसके बाद मार्केट कैसे देखते हो आप मतलब वो हिसाब से मुझे लगता है मार्केट एक्चुअल क्या है 15,000 का भी मार्केट आ सकता है 14 भी आ सकता है एक्चुअल अभी ना अपना मार्केट 30% भी नीचे नहीं आया है ओके जैसे यूएस का आ गया था बीच में और अभी मार्केट टोटल न्यूज बेस्ड चल रहा है हल्का सा भी दूसरे बैंक का भी कोई बैंक करप्सी हो गया है समथिंग अमेरिका हो गया या यूके हो गया समथिंग जो भी कंट्री का हो जाएगा अपने इंडिया चल रहा है इंडिया को
वो ये कर रहा है या सेट कर रहा है बैंकों को, भैया ना कोई डाउन ट्रेंड नहीं आना चाहिए करके। अब गवर्नमेंट भी कर रहा है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं कोई भी स्टॉक बाय करने का, कुछ भी बाय करने का टाइम फ्रेम नहीं है। एक्चुअल 18,400 700 का टाइम में मैंने ओके। जून महीने का पुट लिया है, हम्म। अब प्रॉफिट चल रहा है। अभी मेरा जो थिंकिंग है, जब तक ये 15,200 आएगा तब मैं आधा जो पुट है वो निकालूंगा ओके। प्रॉफिट में। उसके बाद में अगर वहाँ भी अगर वीकली कैंडल बेरिश बनती है, फिर ये 14,400 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है। और मुझे एक थिंकिंग ये भी है कि जो 2 साल में लोग स्मार्टफोन लेके इसमें आया ना, बेवकूफ लोग स्मार्टफोन लेके आया है 2 साल में, 2020 के बाद में। अच्छा, और स्मार्टफोन लेके आके वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझ रहा है कि वो सोच रहा है कि हम लोग बहुत पैसा कमा लेंगे इसमें। लेकिन जो गाँव में लोग बोलता है ना, धोती वाला जो आदमी बोलता है ना, कि जो टाई कोट वाला धोती वाले का बराबरी कभी नहीं कर सकता है। अगर वो 2 एकड़ जमीन ठीक है। सो फाइनल वी आर गोइंग टू गिव फाइनल टच। ओके, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम विशाल, क्रिश एंड केशव। अभी ये वीक, अगले नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स? For positional, you can make a wide range of triangle. Then just, or if you want to make iron condor, you can Okay. do that. Okay. But most likely range might continue: upside 17,300, downside 16,800. This might be the broader view for the next week. And Okay. intraday it can do a lot of drama, but I don't think so this range is going to be fade out anytime soon. Okay. And Keshav, Vishal? Yes, actually, my view is key market should be sideways as what Krish said, and the strategy which can be deployed here is Batman strategy, which I have been deploying since a very long time. But this is the right time, considering the premiums as of now in Bank Nifty. Batman is nothing but a call ratio spread of 1:3 and a put ratio spread of 1:3, and this should not be done on the weekly basis. It should be done on a monthly thing, and which will give you a range of around 8% upside and 8% downside. So I guess, considering sideways market, considering the high premiums, considering जिस तरह से market will go थोड़ा सा शांत, VIX should be dropping a little bit. That should fetch somewhere around 1 to 1.5% in upcoming 2 weeks. So that's something which I have been deploying and which I'll be carrying. One thing I want to mention, Sajjan bhai, here, when you are doing a ratio spreads, do it 2 times, 3 times on the call side. Do it only 1 time on the downside put, because VIX is very much low level. The premium on the put side is very much less. If there is any sudden spike on the downside, obviously premiums might become a bit higher. So in that scenario, try to sell 1:2 ratio on put and call side. Put, one put, 2 calls, or 3 calls, 2 puts, or something like that. Okay. Okay. And So, Vishal? take the range of at least 1,500 to 2,000 points range in Bank Nifty. You don't need to do it with the monthly options, because the monthly options was very much less. You can try with the next week options. So the range will be 2,000 points, 3,000 points. It might be helpful for positional trading. Of course, intraday we can do a lot of drama. That's a different story altogether. So that's how you need to play. Okay. Yeah. Vishal? Yes. So अभी तो रेंज बाउंड ही है, सो अपर साइड 17,000 to 30 to 40 और 16,800 लोअर साइड, ये दो रेंज में ही है। जब तक ये दो रेंज में है ना, जैसे अब क्रिश भाई ने आपने बोला है ना ऑप्शन सेलिंग, मुझे उतना आइडिया नहीं है ऑप्शन सेलिंग का, बट ये जो दो रेंज है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये दो रेंज को पकड़कर आप मतलब ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। बट फॉर ऑप्शन बाइंग अभी तो मुझे लगता है कि वेट करना ही जरूरी है, और न्यू फ्रेश पोजीशंस थोड़ा अवॉइड ही करना है ऑप्शन बाइंग में। बस इतना ही। बस ये दो रेंज जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक न्यूज जो है न्यूट्रल ही रहेंगे। भाई आपको इंट्राडे में स्कैल्पिंग वर्कआउट होगा? स्कैल्पिंग तो होता है। क्या होता है क्रिश भाई, आज ही मैंने बोला ना, आज मैंने बैंक निफ्टी का लिया है तो अच्छा खासा 50-60 पॉइंट मिला, ठीक है। फिर उसके बाद खामोश बैठ गए, फिर उसके बाद सडनली मार्केट डाउन। इंट्राडे में क्या हो रहा है, आपको है ना दोनों साइड मिल रहा है।
बट आपको वो कैच करने आना चाहिए, सिंपल ये चीज है। ओके, ठीक है। सो फॉर टुमारो, just when during the space I just told we shorted SGX Nifty 70 point stop loss, and tomorrow if I'll get a gap up opening around 100 150 point on Bank Nifty or 50 point on Nifty, I'll be going short side. So कल के लिए I'm selling, I'm a seller. Any gap up I'm a seller. I love to चलो sell. चल चलो, फर्स्ट ट्रेड आपको सक्सेस हो जाएगा तो आप सबको बैंक का टिकट बुक करवा दो। सो I'm a seller, ठीक है। हमने डाउ जोन शॉर्ट किया है, एसजीएक्स निफ्टी शॉर्ट किया है, एंड टुमारो इफ गैप अप विल शॉर्ट बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए। नो इफ और बट नथिंग, सेल करने का सीधा। डन डन डन। राइट राइट, ठीक है, ठीक है। ओके, सो see you tomorrow morning with the sell side. Thank you for attending. गुड नाइट सजन भाई, गुड नाइट विशाल भाई। Thank you, शुभ रात्रि। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।